war in Ukraine and the continuing geopolitical crisis that we face today. Today, while India's growth remains strong, inflation is broadly on a declining trajectory. Strong macroeconomic fundamentals of India have also led to greater confidence in our economic prospects. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee meeting, which met on 6th, 7th, and 8th of August. And it goes as follows. The Monetary Policy Committee met on 6th, 7th, and 8th August. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and the overall outlook, it decided by a majority of 4:2 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. So as you can see, there is good amount of convergence between market expectations and the RBI's policies. In other words, both market expectations and RBI policies, so far as monetary policy is concerned, are well aligned. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Headline inflation, after remaining steady at 4.8% during April and May this year, increased to 5.1% in June, primarily driven by the food component, which remains stubborn. While the fuel group remained in deflation. The expected moderation in headline inflation during the second quarter of 24-25, that is in the second quarter of the current financial year, on account of favorable base effects, is likely to reverse in the third quarter. This is something which I had also explained in the last monetary policy meeting in June, that in the third quarter we have a substantial advantage of the base effect, which may pull down the overall inflation numbers. But going forward, that base effect will wear out. Domestic growth, however, in these circumstances is holding up well on the back of steady urban consumption and improving rural consumption, coupled with strong investment demand. Amidst this confluence of factors, the MPC judged that it is important for monetary policy to stay the course while maintaining close vigil on the inflation trajectory and the risks thereof. Resilient and steady growth in GDP enables monetary policy to focus unambiguously on inflation. It must continue to be disinflationary and resolute in its commitment to aligning inflation to the target of 4% on a durable basis. Accordingly, the Monetary Policy Committee decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting. The commitment of monetary policy to ensure price stability would strengthen the foundations for a period of sustained growth. Now, this point needs to be appreciated, that ensuring price stability eventually results and supports a period of sustained growth. Without price stability, high growth cannot be sustained. So therefore, especially in a situation where our GDP growth is holding up well, we have decided to focus on inflation and ensure price stability, mainly to support growth. In these circumstances, the MPC reiterated the need to continue with the disinflationary stance of withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I would now like to provide an assessment of the growth and inflation conditions in India. But before that, let me
briefly touch upon the global growth scenario. Global economic outlook exhibits steady, though uneven expansion. Manufacturing is indicating slowdown while services activity is holding up. Notwithstanding sticky services prices, inflation is receding grudgingly across major economies. With varying outlook for growth and inflation across countries, monetary policy is showing signs of divergence across jurisdictions. Several central banks are cautiously moving towards policy pivots, though through forward guidance and rate cuts. While at the same time, there has been tightening by a few central banks also. So on the one hand, you have several central banks which are moving towards a rate cut scenario, but on the other hand, you have a few economies which are on a rate hike mode. Global financial markets are exhibiting volatility. Bond yields and the dollar index have softened since the last meeting of the MPC in June. While the near term outlook looks positive, I'm talking about global growth. While the near term outlook looks positive, there are significant challenges to medium term global growth outlook. Demographic shifts, climate change, geopolitical tensions and fragmentations, rising public debt, and new technologies such as artificial intelligence pose new sets of challenges. A coherent policy approach in which monetary policy is complemented by other policies to manage the policy trade offs will be crucial to deal with such multiple challenges. Let me now turn to domestic growth. Domestic economic activity continues to be resilient. On the supply side, steady progress in southwest monsoon, higher cumulative kharif sowing, and improving reservoir levels augur very well for the kharif output. The likelihood of La Nina conditions developing during the second half of the monsoon season is likely to have a bearing on agricultural production in the current financial year. Manufacturing activity continues to gain ground on the back of improving domestic demand. The index of industrial production, that is IIP, growth accelerated in May this year. Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, at 58.1 in July remained elevated. Services sector maintained buoyancy as evidenced by the available high frequency indicators. Now, when I say high frequency indicators, I have given a lot of details in the footnote of my statement, which, as you would know, will get uploaded immediately my statement is over. In fact, for almost most of the statements which I am making, there is a lot of backup data which we have given in the footnotes. So in the interest of time, I'm not reading out that data, but it is there in the footnote. So when the statement is uploaded, I would encourage you to please have a look at it. Similarly, PMI services stood strong at 60.3 in July and is above 60 for 7 consecutive months, indicating robust expansion of services. On the demand side, household consumption is supporting a turnaround in rural demand and steady discretionary spending in urban areas. Fixed investment activity remained buoyant amid government's continued thrust on capex and other policy support from the government. Private corporate investment is gaining steam on the back of expansion in bank credit. Merchandise exports expanded in June, although at a slower pace. Expansion in non-oil, non-gold imports accelerated, reflecting resilience in domestic demand. Services exports recorded double-digit growth in May this year before moderating in June. Looking ahead, improved agricultural activity brightens the prospects of rural consumption, while sustained buoyancy in services activity is expected to support urban consumption. The healthy balance sheets of banks and corporates, thrust on capex by the government,
and visible signs of pickup in private investment would drive investment activity in the current year. Improving prospects of global trade are expected to aid external demand. In fact, so far as external demand and the improving volume of global trade is concerned, all the international agencies have projected, a good growth in global trade vis-a-vis the numbers that we saw last year, and the numbers are given in the footnote. The spillovers from protracted geopolitical tensions, volatility in international financial markets, and geoeconomic fragmentation, however, pose risks on the downside. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2024-25, that is for the current year, is projected at 7.2%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 7.2%, Q3 at 7.3%, and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for Q1 25-26, and this is something which we are giving for the first time. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 2025-26, is projected at 7.2%. The risks are evenly balanced. Now, it may be noticed that we have slightly moderated the growth projection for the first quarter of the current financial year in relation to the projection which we gave in the previous MPC in June. This is primarily due to updated information on certain high frequency indicators which show lower than anticipated corporate profitability, general government expenditure, and core industries output. Let me now turn to inflation. Headline inflation edged up to 5.1% in June 2024 due to higher than expected food inflation. Fuel remained in deflation for the 10th consecutive month. Core inflation moderated to a historic low in the months of May and June. Food inflation, which has a weight of around 46% in the CPI basket, contributed to more than 75% of headline inflation in May and June. Vegetable prices increased sharply and contributed to about 35% to inflation in June. High inflation pressures persisted across other major food items also, details of which are given in the footnote. On the other hand, the softening in core inflation continues to be broad-based, with core services inflation touching a new low in the current CPI series during the month of May and June 2024. The high food price momentum is likely to have continued in the month of July also. Large favorable base effects, as I said earlier, may however push headline inflation downwards in July. The impact of the revision in milk prices and mobile tariffs also needs to be carefully monitored. A degree of relief in food inflation is expected from the pickup in southwest monsoon and the healthy progress in Kharif sowing. Buffer stocks of cereals continue to be above the norms. Global food prices showed signs of easing in the month of July after registering increase since March 2024. Assuming a normal monsoon and taking into account the 4.9% inflation print, which has already come out so far as Q1 is concerned, CPI inflation for the current financial year, that is 2024-25, is projected at 4.5%, with Q2 at 4.4%, Q3 at 4.7%, and Q4 at 4.3%. CPI inflation for the first quarter of next financial year, that is Q1 2025-26, is projected at 4.4%. The risks are evenly balanced. Now, I have given a brief analysis of the growth scenario and also the inflation scenario so far as Indian economy is concerned. Now the question arises,
What do these inflation and growth conditions mean so far as monetary policy is concerned? Let me try and answer. As stated earlier, continuing food price shocks slowed the process of disinflation in Q1 2024-25. There is also considerable divergence between headline and core inflation. This has brought to the fore the issue of how much importance should the MPC give to food inflation. Let me dwell upon this in some detail. First and foremost is the fact that our target is the headline inflation, where food inflation has a weight of about 46%. With this high share of food in the consumption basket, food inflation pressures cannot be ignored. Further, public at large understands inflation more in terms of food inflation than the other components of headline inflation. Therefore, we cannot and should not become complacent merely because core inflation has fallen considerably. Second, and equally important, is the reality that high food inflation adversely affects household inflation expectations, which have a significant impact on future trajectory of inflation. Household inflation expectations, after witnessing a moderating trend between May 2022 and September 2023, have edged up on the back of high food inflation since November 2023. Persistently high food inflation and unanchored inflation expectations, if they materialize, could lead to spillovers to core inflation through pickup in wages on cost of living considerations. This in turn could be passed on by firms in the form of higher prices for services as well as goods, especially in a scenario of strong aggregate demand. Third, these behavioral changes can then result in overall inflation becoming sticky even after food inflation recedes. The MPC, to summarize, what these points which I was mentioning about the importance of food inflation and how it can high persistent food inflation can spill over to core and to the headline. Let me just summarize this part by saying that the MPC may look through high food inflation if it is transitory, but in an environment of persisting high food inflation as we are experiencing now, the MPC cannot afford to do so. It has to remain vigilant to prevent spillovers or second round effects from persistent food inflation and preserve the gains made so far in monetary policy credibility. Now, overall, as I have said in my statement, and as the numbers would speak, overall the inflation trajectory has been moderating, and we do expect it to moderate. But the pace of moderation has been uneven and slow. So therefore, we need to be watchful to ensure that we move to closer to 4%, and the CPI inflation gets aligned to the 4% target on a durable basis. That indeed is the that indeed would be a what I should say, that it indeed would be the best contribution which monetary policy can make to support economic growth in the country. Liquidity and financial market conditions. This is what I would now like to focus on. System liquidity transited from deficit in June to surplus conditions in July. In tune with changing liquidity conditions, the Reserve Bank conducted two-way operations under the LAF to ensure that the interbank overnight rate remained closely aligned to the policy rate. Mirroring the liquidity dynamics, the weighted average call rate, that is WACR, on an average remained close to the middle of the LAF corridor. Across the term money market segment, the yields on certificates of deposit and 3-month treasury bills, that is T-bills, eased, while the yields on commercial papers remained stable. The 10-year GSEC yield softened in June, July, and in August so far. The term premium has remained steady in recent months. Transmission in the credit market remains ongoing. Going forward,
The Reserve Bank will continue to be nimble and flexible in its liquidity management operations, keeping in view the evolving liquidity conditions to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner. During 2024-25 up to August 7, the Indian rupee remained largely range bound. The lower volatility of the Indian rupee bears testimony to India's strong economic and financial stability and an improving external outlook. In the last few days, global financial markets have seen turmoil on concerns of growth slowdown in a major economy, flare up in geopolitical tensions in the Middle East, and the unwinding of carry trade. These developments have implications for emerging market economies. In this context, it would be important for market participants to keep in mind the strength of India's macroeconomic fundamentals, which remain robust. India has built strong buffers that impart resilience to the domestic economy from such global spillovers. The Reserve Bank remains committed to ensure orderly evolution of financial markets in its regulatory domain. Let me turn to now financial stability. The Indian financial system remains resilient and is gaining strength from the broader macroeconomic stability. Its well capitalized and unclogged balance sheet is reflective of higher risk absorption capacity. The NBFC sector and the urban cooperative banks also continue to show improvements. Even in such stable financial conditions, Even in such stable financial sector conditions, the emphasis cannot shift away from proactive identification of potential risks and challenges, if any. In this context, there are four, in the current context, there are four issues which I would like to highlight. First, it is observed that the alternative investment avenues are becoming more attractive to retail customers, and banks are facing challenges on the funding front with bank deposits trailing loan growth. As a result, banks are taking greater recourse to short term non retail deposits and other instruments of liability to meet the incremental credit demand. This, as I have emphasized elsewhere, may potentially expose the banking system to structural liquidity issues. Banks may therefore focus more on mobilization of household financial savings through innovative products and service offerings and by leveraging fully on their vast branch network. It is the first point which I wanted to highlight in the context of the financial sector. You see, as I mentioned a little while ago, the overall financial sector continues to be healthy and stable. As the regulator of certain segments of the financial sector, it's our responsibility to point out the possible or the potential areas where risks may come up. And it's our responsibility to just suggest to the banks, to the NBFCs and other financial institutions to be extra careful and to keep extra vigil on certain aspects, which is not a problem at the moment, but if unattended, can become a problem at a later stage. But so far as the current scenario is concerned, and so far as the overall financial sector outlook is concerned, I would like to again reiterate and re-emphasize that India's financial sector remains stable and healthy. Now, in this context, the second point which I would like to mention is that the sectors in which preemptive regulatory measures were announced by the Reserve Bank in November last year have shown moderation in credit growth. However, certain segments of personal loans continue to witness high growth. Excess leverage through retail loans, mostly for consumption purposes, needs careful monitoring from macroprudential point of view. It calls for careful assessment and calibration of underwriting standards as may be required, as well as post-sanction monitoring of such loans. Most of the banks are doing it, but we need to constantly re-emphasize this point.
The third issue that is attracting our attention is home equity loans or top up housing loans, as they are called in India, which have been growing at a brisk pace. Banks and NBFCs have also been offering top up loans on other collateralized loans like gold loans. It is noticed that the regulatory prescriptions relating to loan to value, that is LTV ratio, risk weights, and monitoring of end use of funds are not being strictly adhered to by certain entities. I repeat, certain entities. Such practices may lead to loan funds being deployed in unproductive segments or for speculative purposes. Banks and NBFCs would therefore be well advised to review such practices and take necessary remedial action. Fourth, recently there was an unprecedented outage globally which affected businesses in many countries. The outage demonstrated how minor technical change, if it goes haywire, can wreak, can wreak havoc on a global scale. It also showed the fast growing dependence on big techs and third party technology solution providers. In this background, it is necessary that banks and financial institutions build appropriate risk management frameworks in their IT, cybersecurity, and third party outsourcing arrangements to maintain operational resilience. The Reserve Bank has time and again emphasized the importance of robust business continuity plans, that is BCP, to deal with such incidents and situations. Now I would like to focus on the external sector. India's current account deficit moderated to 0.7% of GDP in 2023-24 from 2% of GDP in 2022-23 due to a lower trade deficit and robust services and remittances receipts. In the first quarter this year, that is in the first quarter of 24-25, merchandise trade deficit widened as imports grew faster than exports. Buoyancy in services exports and strong remittance receipts are expected to keep the current account deficit within sustainable level in Q1 24-25. We expect current account deficit to remain eminently manageable during the current financial year. On the external financing side, portfolio foreign portfolio investors turned net buyers in the domestic market from June 2024 with net inflows of US $9.7 billion during June August, that is till August 6, after witnessing outflows of US $4.2 billion in April and May. Foreign direct investment, that is FDI flows, picked up in 2024-25 as gross FDI rose by more than 20% during April and May 2024, while net FDI flows doubled during this period compared to the corresponding period of the previous year. External commercial borrowings moderated during April-June in the current financial year, while non-resident deposits recorded higher net inflows during April-May compared to the previous year. India's foreign exchange reserves, this is something worth noting, India's foreign exchange reserves reached a historical high of US $675 billion as of August 2nd, 2024. Overall, India's external sector remains resilient as key indicators continue to improve. We remain confident of meeting our external financing requirements confidently. Now, there are certain additional measures. There are 5 of them, and I would like to announce them quickly. First relates to public repository, that is creation of a public repository of digital lending apps. The Reserve Bank has taken several measures for the orderly development of the digital lending ecosystem in India. As a further measure in this direction and to address the problems arising from unauthorized digital lending apps,
The Reserve Bank proposes to create a public repository of digital lending apps deployed by the regulated entities. The regulated entities of RBI will report and update information about their digital lending apps, that is, about the digital lending apps whose services they are availing in this repository. This measure will help the consumers to identify the unauthorized lending apps. The next announcement relates to frequency of reporting of credit information to credit information companies, that is CICs. The availability of accurate credit information is vital both for lenders and borrowers. At present, lenders are required to report credit information to CICs on a monthly basis or at such shorter intervals as may be agreed between the lenders and the CICs. It is proposed to increase the frequency of reporting of credit information to the CICs to a fortnightly basis or at shorter intervals as may be agreed between the lenders and the CICs. Consequently, borrowers will benefit from faster updation of their credit information, especially when they repay their loans. The lenders, on their part, will be able to make better risk assessment of the borrowers. The next announcement relates to enhancing transaction limit for tax payments through UPI. Currently, the transaction limit for UPI is rupees 1 lakh, except for certain category of payments which have higher transaction limit. It has now been decided to enhance the limit for tax payments through UPI from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will further ease payments by consumers through the UPI. Next announcement relates to introduction of delegated payments through the UPI. It is proposed to introduce a facility of delegated payments in the UPI. This would enable an individual, that is a primary user, to allow another individual, namely a secondary user, to make UPI transactions up to a limit to be set by the primary user from the primary user's bank account without the need for the secondary user to have a separate bank account linked to UPI. This will further deepen the reach and usage of digital payments, in particular the UPI. The next announcement, and that's the last announcement, which is very important, is continuous clearing of checks. This is something which will have wide-ranging impact, and it's a step towards having greater ease of doing business for individuals as well as for entities. At present, check clearing through check truncation system, that is CTS, operates on a batch processing mode and has a clearing cycle of up to 2 working days. It is proposed to reduce the clearing cycle by introducing continuous clearing with on realization settlement in the check truncation system. This means that checks will be cleared within a few hours on the day of presentation itself. This will speed up check payments and benefit both the payer, that is the drawee of the check. So this will benefit both the payer and the payee. Now let me try and conclude. I have provided broad analysis of the inflation situation, the growth inflation dynamics. Then I have highlighted on the financial sector, I have highlighted on the external sector, and I have also made certain announcements, and I now proceed to conclude. As I said, inflation, I just repeat it for the sake of putting things in perspective. Inflation, that is headline inflation, is moderating, but the pace is uneven and slow. Therefore, we need to be watchful, and we are watchful of the inflation scenario. We are also watchful of the growth trajectory, and both of them appear to be moving in a very balanced manner. Financial sector remains stable. Our external sector also remains stable. We have built up substantial buffers, which makes India much more resilient than what it was years ago.
Now, on the current, so let me now try and conclude. Under the current monetary policy setting, inflation and growth are evolving in a balanced manner, and overall macroeconomic conditions are stable. Growth remains resilient, inflation has been trending downward, and we have made progress in achieving price stability. But we have more distance to cover. The progress towards our goal of price stability has been uneven due to large and persistent supply side shocks, especially in food items. We therefore need to remain vigilant to ensure that inflation moves sustainably towards the target while supporting growth. This approach would be net positive for sustained high growth. We recognize the challenges along the way, but we have to be patient to finish the job at hand. In the current context, the following words of Mahatma Gandhi are highly relevant, and I quote: the slightest error of judgment, I repeat, the slightest error of judgment, a hasty action, or a hasty word may put back the hands of the clock of progress. Policies have therefore to be cautiously evolved. Thank you. Namaskar. धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। द एप्रोप्रिएशन बिल 2024 जिसमें 102 हेड ऑफ अकाउंट हैं और द जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल जिसमें 36 हेड ऑफ अकाउंट है, इसके बारे में मैं सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर, बोलने से शुरुआत करने से पहले तो जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं तो विपक्ष के लोगों को भी पूरे बैठ करके इस बात को सुनना चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन जिस प्रकार का अनैतिक अनाचार व्यवहार करते हैं, बार बार हंगामा करके बाहर जाना, फिर कुछ लोग अंदर आना, यह सदन के मर्यादा के अनुरूप नहीं है। जब विपक्ष के दिग्विजय सिंह बोल रहे थे कि भारत की स्थिति बहुत खराब है, मैं आपके समझ बताना चाहूंगा कि जो मोदी सरकार है, इसमें सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, किसानों के उत्थान के लिए अधिक से अधिक फंड खर्च करना, गरीब का कल्याण किस प्रकार हो उसके लिए पूरी तिजोरी खोल देना, और जितना रिफॉर्म हो सके उस रिफॉर्म पे भी आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। और उसी का नतीजा है कि मैं कुछ इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी उसमें 142 था और आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 63 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कांग्रेस के समय पूरे विश्व भर में 76 था, आज 40 है। ई गवर्नेंस इंडेक्स कांग्रेस के समय 193 था, आज 96 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टूरिज्म का जो टूरिज्म इंडेक्स है, कांग्रेस के समय तो देश में लोग आते नहीं थे, डर लगता था, उसमें 65 था, आज यह 39 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कांग्रेस की सरकार थी, पूरे विश्व भर में 30 नंबर पे थे, आज उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और पूरे विश्व भर में 7वें स्थान पे कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। इसी प्रकार से ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, डिजिटल इंडिया के क्रांति, सुन लीजिए, डाटा है, आप पढ़ लीजिए, बैठ कर ना बोले। ई पार्टिसिपेशन जो इंडेक्स है, तो उस समय किस प्रकार से घोटाला थे, क्योंकि डिजिटल क्रांति थी नहीं, अब डीबीटी भी आ गया है, तो इनके समय में 40 नंबर पे थे ग्लोबली हम, आज ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में हम 15वें नंबर पे आ गए हैं। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स,
इनके समय में, कांग्रेस के समय में 54 नंबर पे थी और आज हम 38 नंबर पे मोदी जी के नेतृत्व में आ गए। यह सभी इंडेक्स जितने भी हैं, यह ग्लोबल एजेंसी वह रिसर्च करती हैं, उसमें सभी में मोदी जी के नेतृत्व में थोड़ा जंप नहीं बल्कि क्वांटम जंप कोई हुआ है, ये भारत का हुआ है। सरकार के काम करने का जो वह इतना बड़ा फंड खर्च करके जो हमारा पूरा का पूरा अगर एलोकेशन देखेंगे सारे हेड ऑफ अकाउंट में, तो 2013-14 से देखेंगे तो कोई 10-20-25% नहीं बढ़ा है। अगर हेड ऑफ अकाउंट में देखेंगे किसी में 5 गुना, किसी में 7 गुना, अगर एवरेज देखेंगे तो पूरे एक्सपेंडिचर जो एलोकेशन है उसमें 3 गुना पहले से अधिक खर्च हुआ है। यह मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। सरकार के स्पीड को देखिए, जब इतना अधिक पैसा खर्च करते हैं तो वह सरकार की स्केल और स्पीड के बारे में। नेशनल हाईवे जब यूपीए के समय था तो 12 किलोमीटर पर डे बनती थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में 28 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। अब गडकरी जी का नाम लिया तो मैं बताता हूं सर, उस समय अखबारों में निकलता था मिस्टर 15%, मिस्टर 15%, मिस्टर 15% का, मतलब 15% नेशनल हाईवे में कमीशन दो तब जाकर आपको ठेका मिलेगा। अखबारों में निकलता था 15% कमीशन का। इसलिए बुलवाओ मत, बुलवाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। टोल प्लाजा में जब यूपीए का समय था तो कितना समय लगता था, और एक टोल को पार करने में लगता था कि समुद्र ही पार कर रहे हैं, उसमें 12 मिनट 20 सेकंड लगता था। आज टोल प्लाजा जो है वो सब ऑटोमेटिक हो गए, फास्ट ट्रैक हो गया। आज टोल प्लाजा में अगर एवरेज टाइम देखेंगे तो इनके समय में 12 मिनट 20 जो लगते थे सेकंड, आज केवल 47 सेकंड में आप पार होके चले जाएंगे। रेलवे ट्रैक, मतलब रेलवे में जिस प्रकार से कई गुना पैसा खर्च हो रहा है, इनके समय में रेलवे, भाई कछुए की स्पीड से रेलवे पटरी पे काम होता था, कछुआ भी तेज चल सकता था, लेकिन 14 किलोमीटर, इनके समय में केवल 4 किलोमीटर पर डे बनता था रेलवे ट्रैक। जबकि देश की, विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, अधिकांश लोग ट्रेन में चलते हैं, तो लोगों को ट्रेन की सुविधा मिलनी चाहिए। तो इनके समय में केवल 4 किलोमीटर चलता था। आज बहुत बड़ा फंड एलोकेट करने के कारण 4 किलोमीटर से 14 किलोमीटर पर डे रेलवे ट्रैक का काम हो रहा है। एक्सीडेंट, आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज कोई भी ऐसी जो जगह नहीं है जो मानव रहित जीरो हो गया, मतलब कहीं पे भी जो फाटक था आज भी उसको बंद करता था और जीरो हो गया, 100% ऑटोमेटिक हो गया। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इनके समय में 233 एवरेज एक्सीडेंट हुए थे, हमारे समय में नहीं होना चाहिए। इस पे 34 एक्सीडेंट हुए हैं। उस पे भी आज जब हमारे रेल मंत्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1200 करोड़ रुपए कवच पे खर्च कर दिया है और 1100 करोड़ रुपए और इस बजट में उसको खर्च करने जा रहे हैं। आने वाले समय में 0 एक्सीडेंट करने का यह लक्ष्य है। सर, आज गांव के लोग भी मोबाइल बैठ करके, मोबाइल पे अधिकांश लोग न्यूज भी देखते हैं सब, और उसके साथ साथ बात भी करते हैं। इनके समय में था, जो कांग्रेस के समय था, कितना बड़ा 2G से लेकर कितना बड़ा घोटाला हुआ था, उसके कारण 2G 3G जो भी है, उस समय घोटाले के कारण मोबाइल का जो वायरलेस डाटा टैरिफ था वह 269 पर GB था, और आज जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इतना सस्ता हुआ है, 269, मतलब 2 रुपए 69 पैसे की जगह आज 10 पैसे हो गया है। 269 की जगह मात्र 10, मतलब कितना सस्ता हो गया। सर, इस बजट में अगर बजट देखेंगे, जो अप्रोप्रिएशन जिसके लिए पैसा मांगा गया है, तो सबसे अधिक अगर थ्रस्ट दिया गया है तो युवाओं का किस प्रकार से कल्याण हो, रोजगार के, स्वरोजगार के उनके अवसर किस प्रकार से मिले, उनको किस प्रकार से एजुकेट किया जाए, उनकी स्किलिंग किया जाए, उसके लिए 5 की स्कीम आई है और उस 5 स्कीम के माध्यम से आने वाले समय में 4.1 करोड़ लोगों को उससे लाभ मिलेगा। और इसके लिए कोई 10-20 हजार करोड़ का नहीं, बस इसके लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का सरकार ने इस साल केवल प्रावधान रखा है, जिसके माध्यम से लोगों को
अलग 5 स्कीम के माध्यम से उनकी स्किलिंग बढ़ेगी और वो भारत के निर्माण में अपना अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। सर, कुछ मिनिस्ट्री के एलोकेशन के बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा। सर, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे यूपीए के समय में केवल 25,889 करोड़ था, 25,859 करोड़ रुपए, जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के लिए 25,000 करोड़ से 2,78,000 करोड़, कोई कल्पना कर सकता है? रेलवे के लिए इनके समय में केवल सर 28,000 करोड़ रुपए। बोल रहे थे अभी दिग्विजय सिंह ने क्या किया, कैसे? अरे सुन लो भैया, आप डाटा भी पढ़ लो। आपके समय में केवल 28,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए खर्च होता था। क्या पटरी, नई नई पटरी आएगी, किस प्रकार से कोच होगा, क्या मॉडर्नाइजेशन करेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 28,000 करोड़ से बढ़कर 2,55,000 करोड़ रुपए इसमें एलोकेशन है केवल रेलवे मिनिस्ट्री के लिए। उसी प्रकार से अगर पावर सेक्टर में देखेंगे तो 10,000 करोड़ इनके समय में होता था, अभी हमारा 20,000 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, जो आज इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है हमारे पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से उनका एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें इनके समय में मिनिस्ट्री में केवल 3,052 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री को दिया जाता था। 3,052 से बढ़ा करके अब जो है 21,936 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंफॉर्मेशन को इस एलोकेशन में रखा गया। कल्पना करिए सर, किस प्रकार से 1, 2, 3 गुना नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना अलग अलग प्रकार से इसमें बढ़ाया गया है, बजट को बढ़ाया गया। और इसीलिए आज विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था भारत की चल रही है। सर, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा जो गरीब के लिए हुआ है। गरीब का कुछ नहीं हुआ, गरीब को कुछ नहीं हुआ। अरे भैया पढ़ तो लो इस एलोकेशन में गरीब के लिए क्या क्या किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो शुरू हुई, 1 करोड़ लोगों को बिजली जो उनको मुफ्त भी मिलेगी, अगर वो सोलर लगाएंगे वो बेच भी सकेंगे। इसके माध्यम से 12 से 18,000 करोड़ रुपए पर साल बचत भी होगी और उनका फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। और इसी एलोकेशन में प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है, उसमें 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाएगा, जिसमें 72 लाख कोई है तो 72 लाख ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वो 72 लाख उनको देने का काम होगा। सर, एलपीजी गैस कनेक्शन, इनके समय में सर एलपीजी का गैस कनेक्शन देश की आजादी के बाद केवल 14 करोड़ घरों में ही गैस कनेक्शन था, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि लकड़ी काटो, लकड़ी काट करके ले आओ, उस पर खाना बनाओ, जिससे पर्यावरण का भी नुकसान होता था। घर की महिलाएं या पुरुष कितनी दूर से लकड़ी ले आते थे, और जब लकड़ी गीली हो जाती थी तो घर में चाय भी नहीं बनता था, धुआं का आलम इतना होता था, लेकिन चिंता नहीं थी गरीबों की। गरीबों की इनको चिंता ही नहीं थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो इनके समय 14.5 करोड़ लोगों को एलपीजी था, मोदी जी के नेतृत्व में 31.4 करोड़ लोगों के घरों में गैस कनेक्शन है, 2 गुना से अधिक। सर, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इसका इंडेक्स है सर, इसकी एक रिपोर्ट है, कह रहे गरीबी की बात के मोदी जी के नेतृत्व में गरीब अधिक हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2013-14 में 29% लोग, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2013-14 29% लोग गरीब थे। आज 2022-23 में यह घटकर 29 से 11% आ गया और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। यह मोदी जी का नेतृत्व है। इसलिए इनको भी इस बात का, मैं कहूं कि इनको भी इस बात का तारीफ ही करनी चाहिए। अभी किसान के लिए हुआ, किसान के लिए कुछ नहीं हुआ। सर, नीम कोटेड यूरिया कौन ले आया? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया। कांग्रेस के समय तो उसमें यूरिया में ब्लैक होता था, डंडे पड़ते थे। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि, यही कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें बीमा अगर फसल नुकसान होती थी उनको बीमा नहीं मिलता था। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी कि देखो 50% फसल नहीं, अगर किसी किसान की 33% भी फसल नुकसान हो जाती है तो उसको भी बीमा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही है। और अनेकों एमएसपी का दाम भी बढ़ाया,
और तो और कोई सोच सकता था किसान रेल भी चलेगी। अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हार्टिकल्चर प्रोड्यूस है, अब हमारे मिर्जापुर इलाहाबाद से बंबई कैसे पहुंचे, वो तो जा नहीं सकता था। तो उनको देखने के लिए कि वह भी हार्टिकल्चर प्रोड्यूस जो है वो खराब ना हो, क्योंकि वो पेरिसेबल नेचर के होते, उसके लिए अगर किसी ने किसान ट्रेन चलवाने, किसान रेल चलवाने का काम किया है तो उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसे किसानों को उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। किसानों के बारे में इतना अधिक इस सरकार ने किया ये पीओ से, अगर उसके बारे में उपसभापति जी मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए उसके बारे में मैं और हमारे मित्र लोग बोलेंगे। और रेलवे की जब मैं बात बता रहा था, तो रेलवे का जो फ्रेट लोडिंग है, अब रेलवे से पटरी भी पीछे गई, तो रेलवे के माध्यम से फ्रेट लोडिंग जो है वह 1588 मिलियन मेट्रिक टन आज हो रही है, और इनके समय 1095 था। आने वाले समय में 2030 तक लक्ष्य है कि पटरियों को और मजबूत किया जाए और 3000 मिलियन टन यह करने का प्रावधान है। आज पूरे देश में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, ये सभी ट्रेनें चल रही है। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और ट्रेन बिल्कुल अभी 4000 डिब्बे ऐसे हैं जिनको आधुनिक एसी करने का प्रावधान है इस बजट में, कि 4000 डिब्बों को बिल्कुल एसी किया जाएगा। और तो और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी इसी देश में चलेगी, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज पूरा देश के लोग खुश हैं क्योंकि चलने में भी उनको सुविधा मिल रही है और अनेकों प्रकार से उनके जीवन में सुविधा मिल रही है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास हो, लोग आकर के वहां जमीन भी ले, इंडस्ट्री भी लगाए, लोगों को रोजगार मिले। तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिन्होंने 28,400 करोड़ रुपए 28,400 करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज के लिए जम्मू कश्मीर में उन्होंने सैंक्शन किया। मानव जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है, बताऊंगा तो आधा घंटा लगेगा। कुल मिला करके मैं एक ही बात कहूंगा कि विपक्ष के साथियों से जो काम हुआ है, जो डाटा है, उसको आप पढ़ लीजिए। अगर आप खुद भी पढ़ लेंगे तो कमी नहीं निकालेंगे। यह सरकार बहुत तेज से आगे बढ़ रही है और मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये सभी को विश्वास है, इनको हो या नहीं अंदर से, तो इनको भी विश्वास है कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to respond to several members of parliament who have spoken on the finance bill. So the vision of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been to establish a simple, efficient, fair and equitous technology-driven taxation regime in this country. So simplification and ease of compliance for the taxpayer has been the primary objective with which in the last 10 years and this year in the third term of Prime Minister Modi, the approach to taxation has been to simplify the taxation, reduce the burden on taxpayer, and make sure it is transparent and equitous. So this year also, our approach has been that we bring in greater simplification of tax laws and procedures, and that we enable growth and employment in this country. So the twin approach for getting the taxation regime in this country a lot more simpler and technology-driven has been the broad principle based on which the proposals have been laid before this august House. We've actually brought in transformational changes in the tax governance in the last decade. So without drastically increasing taxes and minimizing litigation, we have actually helped, I would think, in bringing a simplified taxation regime, greater transparency, ease of compliance, and driven by the trust we have on the taxpayers. So several members have spoken about tax burden on the middle class. I'll of course come a bit later to talk and to respond to individual honorable members who have spoken on specific issues.
But broadly on this issue of burdening the middle class, several members have spoken, but I would just take some names. Other names will come when I respond in specific. Amar Singh ji, Arun Nehru ji, Neeraj Maurya ji, Supriya Sule ji, Tanuj Punya ji, Sachidanandam, Honorable Member, and also Honorable Member Avinash Reddy ji have all spoken about the burden on the middle class, taxes not really being reduced on them, and so on. In general, I want to put forth before you, sir, that the specific items on which I would propose, and I believe that middle class stand to benefit. So I will name them, specify them. In 2023, sir, the slabs for personal income tax were significantly liberalized. All taxpayers had reduced tax liability of 37,500 rupees. This government has again revised slabs in the new regime, even now in this budget. Certainly, this has an impact on the middle class, I would believe. Standard deduction for salaried employees has also been increased from 50,000 to 75,000 in the new regime in this budget. This is an effective relief of up to 17,500 for a salaried employee. This again, I would believe, benefits the middle class. So further, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 rupees to 30,000 rupees. For salaried employees, deduction on employers' contribution in case of employees who are in private sector and public sector banks, those who are opting for the new tax regime, has been raised from 10% to 14% in this budget. Again, middle class stands to benefit from this as well. Sir, in specific, in the last 2 years, substantial relief has been given to the middle class. I may point out a few things, sir, that while most developed countries were increasing personal income taxes during the COVID-19 crisis, Prime Minister Modi's direction to me, and I've said this earlier also in this house, I'd like to repeat now. Prime Minister Modi's direction to me was totally in contrast with what was happening in developed countries. No tax on our citizen to meet the COVID expenditure. And I would strongly request the honorable members to look back at what happened between 2020, 21, 22, 23. We have not increased the tax at all, sir. Effective tax on an income of 15 lakh rupees, I'm taking it as an example. Effective tax on an income of 15 lakhs was reduced to 10% in 2023 and has been further reduced this year as well. So I want to make this point clear, sir. Again, I would strongly believe this would certainly help the middle class. Again, sir, I would like to remind through you, sir, the August House, that from the days of tax terrorism, when we were accused in 2014, saying do something immediately because tax terrorism is affecting the middle class and small businesses, and the rent-seeking approach of a few in the service had really hurt many of the taxpayers. And this was one of the biggest challenges before this government earlier in 2014, again in 2019, when we're trying to bring in the faceless system. We have moved away from those days, sir, because we brought in the faceless system, which is taxpayer friendly, infused confidence in the taxpayer, and any inquiry on the tax could be responded via email or messages. Besides this, sir, Vivad Se Vishwas schemes were brought in, as a result of which
periodically. Again, this time also we've come up with the Vivad Se Vishwas, and as a result of which, periodically, pending litigation and demands have all been sorted out. Relief was brought in to a wide range of taxpayers, largely, data shows, largely the beneficiaries are MSMEs, individuals, and small companies. I would think this is also the segment which is the middle class segment. So they have found relief because of the Vivad Se Vishwas. So furthermore, small, old, and petty unverified tax demands of 90 lakh taxpayers were totally removed from the records as announced in the interim budget of 2024. ये घोषणा 2024 interim budget में हुआ था, मगर उसका असर अभी दिखने लगे कि 90 लाख टैक्सपेयर्स को हम राहत देने के लिए उस समय घोषणा की। 1.1 करोड़ एंट्रीज इससे निकला रिकॉर्ड से बाहर। इससे राहत सब मिडिल क्लास को मिलता है, छोटे बिजनेसेस को मिलता है, मैं ये जरूर कहना चाहती हूं। सर, स्टार्टअप्स के लिए, फॉर स्टार्टअप्स, the removal of angel tax has come as a big relief, and this was introduced. We have removed it all right. And last year and the year before that, we tried removing the startup world from some of the provisions of the angel tax, and we thought that would address the problem. But if the festering problems really worried the small businesses and the startups in particular, we have totally removed it, abolished it. But when was it brought in? It was brought in 2012, sir. And from then, they, in spite of having at least 2 full years in their hand, the UPA government did not remove the startup. Okay, yes, 10 years, but who was the one who called it as exploitative tax? Yes. You called it exploitative tax. The leader of the opposition called it exploitative tax. And when he introduced it, did he not know that it was exploitative? And now, when you demand abolition of it, you forget that you brought it in, but because you now said it is exploitative, the whole world has to accept it. We have worked on it so that the burden because of these angel tax does not fall on small businesses. But eventually, after having worked on it 2 years over, we have now removed it. But I would again like to remind, sir, through you, that it was called as an exploitative tax and we shall remove it, was a claim by the one who brought it in the first place. Sir, exemption limit of 1 lakh for LTCG, capital gains, long-term capital gains on certain financial assets, such as those which are shares and bonds, have been given, and it is in this budget raised to 1.25 lakhs, which also, I strongly believe, benefits the middle class, because small money which is getting invested in shares and stocks and in bonds for small returns that people would want to have, because their investing capacities are not very big. Even for them, this budget has given relief in that we've exempted it from any kind of tax, and that 1 lakh exemption has been enhanced to 1.25. So middle class, which finds that returns from the stock markets are much better than some of the saving schemes, and therefore who have gone there in their own wisdom, we have not taxed them. We've only given them exemption and enhanced exemption, 1 lakh to 1.25 lakh exemption, certainly aiming at the middle class, sir. Therefore, the narrative which is now being said, oh, the middle class, you put them to difficulty, you've not done anything, they are angry with you. Certainly, sir, I want the parties who are talking about middle class now to understand this country had 98% taxation in one of the earlier regimes, the ancient regimes, which also cared nothing for the fundamental rights of the citizens. The regime which brought in emergency, 98% tax. At that time, no middle class worry. No middle class worry. Sir. Only black money. And for the number of corruption that had happened between 2000
and 14, sir, public of India would have been much better if those monies were in the coffers rather than in the pocket of a few dynastic leaders. Sir, indirect taxes. On the customs side, sir, on the customs side, we have taken several steps to facilitate international trade, ensure processes becoming simpler and faster, and also to lead to lower logistics cost and compliance cost. And this would certainly boost the domestic production and enhance export competitiveness. So when we brought down the customs duty on several of those items listed in this budget, it was aimed at reducing the prices of raw materials and inputs, making domestic production far more cost effective. So to promote trade and employment, sir, we have in this finance bill proposed rate cuts on certain inputs for labor-intensive industries such as leather and textile sectors that will boost job creation and address duty inversion issues which are prevalent in the textile sector. Exemptions and reductions, sir, on 27 critical minerals. I know Honorable Member Supriya Sule has raised a question on it. I'll certainly come to answer specifically on that issue. But exemption and reduction on 27 critical minerals such as lithium, cobalt, and many others, which are necessary for this country's strategic autonomy. Duty rate cuts on precious metals, gold and silver, because India is one of the largest hub for cutting and polishing diamonds, and it creates jobs in big numbers. So, and also the gems and jewelry mark a very big export potential for this country. Therefore, we have brought down the duty rates here so that domestic value addition work can be better carried out for export purposes. So duty rate cuts have also been done on certain inputs for the aqua farming area and the marine industry, so that we'll be able to export more marine products, especially for shrimp. So this is because the industry has been requesting the government. The raw materials which are being imported are critical for maintaining high standards of exports. So although domestic capacity is in the initial stages, I know some of the members of parliament have met me about capacity existing within this country. And at this stage, do we want to reduce the duties? We have certainly supported the manufacturing happening in the country, but till such a time, we didn't want, till such a time that they reach a level, we didn't want marine exports to suffer, and therefore some duty cuts have been brought in there as well. Over and above all this, I have also announced that there will be a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months. And hopefully, at the end of that exercise, we'll have a greater simplified tax structure for our country as a whole. So this is about the indirect tax, customs duties, excise, and so on. Direct tax, I'll come over, sir. Again, technology-backed tax governance is what we are underlining. If income tax assessee goes to his portal to see and to file, I would like to highlight 4 major steps that have come for the taxpayers' convenience. Pre-filled income tax returns based on verified third-party information have made income reporting faster and easier. Many taxpayers themselves have said this pre-filled form actually is helpful for us. We can reject that which is wrong, but some things which we have forgotten are getting captured, and therefore the whole process is simple and easy and helpful. Second, sir, faceless regime. The faceless regime of assessment and appeals has automated major IT-related processes and reduced human interface and rent seeking. There's no discretion because it's now faceless. Third, refunds are issued within days as opposed to months. And that it used to take sometimes several months. Today, average processing time
of returns has reduced from 93 days in 2013-14 to 10 days in 23-24. 93 days for refund now gets done within 10 days. A record number of filings, sir, on that. A record number of 7.28 crores of income tax returns for the year 24-25 were filed till 31st July 2024. A 7.5% increase from 6.77 crores the last year, 23-24. About 58.57 lakh ITRs. And this is a good news, which I would want honorable members to recognize. 58.57 lakh income tax returns were received from first-time income tax filers. First time they are filing, 58.57 lakh people have filed, indicating a widening of the tax base for which a lot of effort to nudge people has been taken up by us. Sir, litigation management is also something on which we've given a lot of attention. We've made multiple announcements in this budget. I'd like to highlight some of them. Reopening and reassessment of taxes has been simplified. This is a very, very big issue because many people, many taxpayers felt, for how long should I keep this record? For how long should I remain in suspense? Till when will the income tax authorities keep asking me for documents? We have simplified that process. I want to highlight that assessment may be opened up to only 5 years post-assessment. But for the 4th and the 5th year, only if unreported income exceeds 50 lakhs. So it will be opened only up to 5 years after the assessment of that particular year is completed. But even afterwards, what is important is the 4th and the 5th year, you will open it up only if there's been unreported income of 50 lakhs or more. The period thus stands reduced from 10 years to 5 years only. Till now, all of us kept our documents for 10 years. Now it will be reduced to only 5 years, and I will be grateful to this member, all these members of this house, for bringing in that change, which will make it much more simpler for all of us literally. In such cases, sir, scheme of block assessment has been introduced for a block of previous 6 years and the year of the search. So for period of assessment in such cases, search happens by income tax. After that, what? How long do I? For that, in such cases, the period of assessment now stands reduced from 10 years to only 6 years, even if there was a search, not beyond 6 years. Sir, and in this budget, again, in order to relieve taxpayers of the pain of pendency, we have again brought in a Vivad Se Vishwas scheme for the settlement of all pending appeals. It is also proposed that the two regimes of taxation of charities will be merged gradually to be one. Also, monetary limit for filing appeals related to direct taxes, excise, and service tax in tax tribunals or in High Court or in the Supreme Court has been enhanced to 60 lakh. Earlier it was 50 lakh. 2 crores for High Courts. Earlier it was 1 crore. And 5 crores in Supreme Court. Earlier it was 2 crores respectively. This will reduce litigation again and promote ease of doing business. So there's no hurry for small cases going into appeal. That has been clearly laid out that unless the amount is this much, you will not even go on appeal. As a consequence, sir, of the proposed upward revision of monetary limits in finance bill, this is a very important data. I would like to place it before the Honorable House. As a consequence of this proposed upward revision of monetary limits in the finance bill of 24,
a total of 7,754 appeals. That is 1,044 appeals pertaining to indirect taxation and 6,710 pertaining to direct tax are likely to be withdrawn from various judicial fora. 7,754 appeals will be withdrawn. You can understand the impact that it can make on taxpayers, the relief that it will give them, so that there are no appeal after appeal going into the courts. Whether it is the Supreme Court, High Court, or CESTAT or ITAT, all of them will be removed. So the rationalization of TDS rates, we have proposed in this budget to reduce TDS rates from 5% to 2%, no different rates, and to eliminate section 194F, where TDS rate is 20%. So even that would be now only 2%. This will improve cash flow issues for small businesses. Again, a very big step forward for small businesses to have more money in their hands rather than give it in the name of TDS. So in this budget, sir, we've also decriminalized late payment of TDS if it is made before the deadline for filing the TDS itself, the TDS statement itself. So we have announced several comprehensive review of the Income Tax Act in this budget. So at the beginning, I did say simplification of taxation, transparency, and so on. I also said our tax proposals are aimed at inducing growth, creating employment, and bringing in investments. So a few steps that we've taken are for the shipping companies so that domestic cruise industry can grow. Also for mining companies and giving a safe harbor provision for them so that they can come into this country's mining sector. Corporate tax rate so that there is parity between investor, corporate, foreign company or domestic, 40 to 35% to attract greater foreign capital, sir. And transfer pricing arrangements are also being streamlined. So in broad, as an introduction, this is what I would want to say about the direct and indirect tax proposals which have come in. I will speak a bit later about the government's amendment that I'm coming up with on capital gains. But before that, I'll go to specific honorable MPs who have suggested a few things. 5 topics in all have emerged. Different MPs have spoken about different things, but I've grouped it all together. 5 topics. Tax burden on middle class was raised by, as I said, Honorable MPs Amar Singh ji, Mahua Moitra, Neeraj Maurya, Supriya Sule, Deepinder Singh Hooda ji, Tanuj Punia, Sachidanandam, and also Avinash Reddy ji. I think broadly on the middle class, I did say things in the opening statement, but one narrative which keeps coming up about the corporate tax and personal income tax. I'd like to highlight just one narrative, sir. That the corporate taxes are lower than the individual taxes, not well-founded. It is not based on facts. It's all right for many honorable members to say, no, corporate taxes far lower than individual tax. I will certainly try to put forth the factual narrative, sir. Corporate is a legal entity. The dividend income is also part of the corporate profits, which was earlier taxed at a lesser rate in the hands of the company. In 2020, we started taxing it in the hands of the shareholders at the applicable rate. I request through you, sir, honorable members, to see where the point that I'm trying to make is. In 2020, we started taxing it at the hands of the shareholders at the applicable rate. This effectively meant that the richer shareholders will pay tax on dividend at 39% rate. Whereas in contrast, small and middle income taxpayers will pay tax on dividends at even less than 10%, which is the effective income tax rate. So this argument, oh, you're taxing less for the corporate, you're giving it all to the big corporates, you're burdening the ordinary
middle-class citizen is not well-founded. I would like honorable members to disabuse themselves of this misunderstanding on this issue. Sir, the gross fixed capital formation data will be of use. I did mention that the first opening speaker of the opposition, Shri Amar Singh Ji, who normally gets into a lot of economic detail, did not raise it. And I was looking forward to hearing from him on great detail about the details that he would pick up on economy-related issues. No, he just gave a very quick speech. I think he came with less information in his hand. I was looking forward to his suggestions, but that was not to be. So the gross fixed capital formation has actually shown a faster growth since pre-pandemic induced contradiction. The pandemic-induced contraction has been overcome with greater gross fixed capital formation. So we need to get the perspective on this, sir. I've laid it before the honorable members. Sir, honorable member Sri Krishna Devarayulu, he was here, yes, has raised this question about faceless assessment. Complaints have been received that too many sections are being evoked and so on. So simple fact which I'd like to put before him is there is a non-intrusive and transparent mechanism which is in place. The faceless assessment eliminates the human interface in total. And this point which was raised by him saying, before the reassessment, the assessor has to pay 20% of the amount, which means on the 80% status quo continues, there is no claim being made. That is the other side of the coin. You said 20% has to be paid. On paying it, 80% claim, it comes almost to a standstill. It is stayed there. So that is a benefit you get out of this payment. Yes, where I'm asking for 100% claim, I'm asking you to pay 20 and 80, I'm not going to do anything till such a time the appeal verdict is coming. It's a relief for you. Sir, also again, Sri Krishna Devarayulu had asked this question about Vivad Se Viswas, that there are no timelines given, and high appeal pendency. So I just want to highlight, we have created new mechanisms in the last 2 years. We've appointed new joint secretaries. JC appeals are sitting there to clear up. More officers are getting deputed to deal with pendencies. And dispute resolution committee was formed in 2023, which deals with these claims. And the monetary limit for filing appeal to the ITAT is proposed to be increased, as I read out just a minute ago. So we are taking a very open-minded approach towards Vivad Se Vishwas. And it has been, this is the second round I've brought that in. So with that, pendency is being addressed. Sir, income tax deduction have been done away with. Hence, middle class is at a loss. So this point was raised by several members. I've read their names earlier. I just want to highlight, sir, the new tax regime which we brought in is simpler, lesser in rates. It also gives a flexibility to the taxpayer to see where he wants to put his money in the absence of exemptions which is available in the old regime. The old regime has not been dissolved. It is still on. So as an alternative to the new tax regime, it still offers all the benefits of various deductions, such as interest on home loan, etc. So that is still available for people to benefit from. Individuals without business income can choose between this regime and the other. And if they want to revert back also, they can revert back. So there is a choice provided for the taxpayer, he can choose. And all right, we brought the new tax regime. People are not interested, is not the case. I want to lay on the house, on the table of the house, the numbers who have moved to the new tax regime. For the previous assessment year, sir, 23-24, till December 31st, 2023, about 3.8% of taxpayers opted for the new tax regime.
and that equates to about 30.93 lakh individuals from a total of 7.98 crore individuals who filed their returns, ITR 1 and ITR 4. However, for the assessment year 24-25, which is what is before us, until July 31st, 2024, there was a dramatic increase in the adoption of the new regime, which approximately 72.8% of all taxpayers choosing to come into the new taxpayer regime. This represents 5.25 crore individuals out of a total of 7.22 crore individuals who file the tax returns, ITRs, in the same category. So new tax regime is actually helping people to see that they are paying less, they stand to benefit with a simple system, and it is helping them. But that doesn't mean that the people who are coming into the new tax regime do not have any savings or investments. They are happening, and the middle class is losing out is not a right argument, because due to the fintech growth, there is greater awareness and ease of investment is happening because of UPI, eKYC, and very many progressive regulations. The investments in mutual funds have also increased tremendously. I will not go into the details of numbers, sir, just to highlight, on an average, this is a very, very important indicative data. On an average, 17.88 lakh new folios have been added every month in the last 5 years since 2019. 17.88 lakh new folios. The unique mutual fund investors are also growing. Today, compared to 2014, when they were just 1 crore mutual fund investors, today they are 4 crore mutual fund investors. Where is 1 and where is 4, sir? Sir, the fifth topic, because I grouped honorable members' concerns, was on the capital gains tax. It is high, and that the indexation has been removed. So I'll highlight in detail the capital gains tax matters. We are also coming up with a government amendment. Several honorable members have spoken about it. The logic of the budgetary proposal on capital gains, sir, is one, that it has to be standardized, simplify, and also treat equally all asset classes. So that it is easy for computation, for filing, for record keeping, and also all asset class be treated equally. Now the current amendment that we are bringing is for land and building assets acquired by individuals and HUFs before 23rd July 2024. It stipulates that in the case of transfer of long-term capital asset, being land or building or both, by an individual or HUF, which is acquired before 23rd July 2024, the taxpayer can compute his taxes under the new scheme, which is 12.5% without indexation, and the old scheme, 20% with indexation, and pay such tax which is the lower of the two. Not only we are coming up with an option, we are also saying calculate under both and tell us whichever is the lower, you pay tax on that. So we have given an option, sir. This ensures that no one faces additional tax burden due to this change. In fact, post the presentation of the budget, the amendment now with which we've come in gives an option, gives a fair option, and gives the choice to the property holder who's going to be selling it. The current amendment actually, sir, before that, there were a number of hypothetical cases which were being raised in the public discourse and suggested that the proposed changes will actually lead to higher taxes. A lot of hypothetical instances were posed before us. The current amendment, I'd like to repeat this, the current amendment
ensures that even in such hypothetical cases, there will be no additional tax burden as a result of the current amendment which I have brought in. No additional tax burden on anybody, whichever the hypothetical case that you may work out on. Sir, also, yes, after the amendment, yes. We hear the public. This is a practice Honorable Prime Minister Modi has brought in the budget making process. Every time, yes, aap sun lijiye bhai, please sun lijiye. Every time after bringing the budget, very well. Prime Minister also represents the people. We all represent the people. Every time sir, very happy to know the opposition wants to own it up now. Prime Minister Modi, I have done this from 2019 myself. Every time we present a budget here, during the recess, when the standing committees are working on the proposals department-wise, I have gone round the country to various destinations. Oh yes, no owing on that. No owing on that. You cannot match it. You cannot match it. I have gone round the country with a budget, met up with professionals, taxpayers, consultants, industry, traders, taken their viewpoint, come here and brought in government amendments so that budget will be representative of the common people's aspirations. We've done that. Sir, for all the heckling and hooting, I like to say, once when I came up with a lot of amendments, I don't want to name some honorable members who are seated here. They asked me, you only presented the budget, now you want so many amendments? I said yes, because I've heard the people who want some things changed. We have the courage of conviction to change it. We brought it in. No point heckling. So sir, therefore, the current amendments ensure that even for such hypothetical cases, there will be no additional tax burden as a result of this proposal. Sir, let me now remind one thing, which even Honorable N.K. Premchandran ji, who I respect for the details with which he comes on every amendment. I respect him for it. He goes through it, he very consciously picks up certain things and questions, which is a very, very strong way to put forward a case, and I'm willing to hear it all. But even Shri N.K. Premchandran, I'm sorry, I'm picking him up not to criticize him, but to respectfully submit to him that the capital gains proposals that we brought in, now getting amended with the approval of this House, also had rollover provisions, meaning somebody had a property, they bought it at some price, later on they sell it, the capital gains that they get, if they only invest it in another property, another one property or two properties, still up to 10 crores, they stand to benefit because there's no tax on it. That rollover provision was there from day one when I submitted this budget on July 23rd. Even now it is there. It continues even now. Middle class has been in our mind even then. It is now even in our mind even now, even after bringing this indexation provision. And yes, for all those who sit and ask me this question, I'll repeat. It was no revenue consideration for which we would remove the indexation provision. We wanted to bring in simplification. We wanted to treat all assets equal, all asset class equal, and therefore we brought it in. But if people are clear that indexation is what they want, we've now given that option as well. So there is no revenue consideration or greed for more money to earn from people who have invested in their house. It is only to simplify that we brought that in. So, sir, that is one rollover benefit about which less is spoken, but it is worthy to remind the middle class about which today a lot of us are being questioned, and I'm happy to answer this question. Rollover provision exists if the capital gains amount is invested in one or a second property as well. But if in case, no, that's not happening.
We are saying you at least invest in those bonds or items which are notified under 54 EC of the Income Tax Act, and there 50 lakh rupees tak you can invest annually. Even that provision existed in July 23, 2024 budget. It exists even now, and it stands to benefit the middle class. I would like to highlight that, sir, and therefore, on the capital gains tax, discussions have been conveniently twisted and turned, but the aspect that the indexation that may be decided, we brought in here. So I'm happy to say that we have yielded to the voices which have been heard, and Prime Minister Modi has done this every year from 2019 onwards. I'm doing this every budget. Sir, so the capital gains and also the government amendments have explained. The last issue, sir, if you give me that 2 minutes extra, is on GST. मैं आ रही हूँ सर, उसी में आ रही हूँ, उनसे परमिशन मांग रही हूँ। जीएसटी के ऊपर सर बिल्कुल मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ, सबके सुनेंगे, मगर उसमें थोड़ा समझ का, आई मीन अंडरस्टैंडिंग का जो इशू है उसको भी मैं सामने रखती हूँ। स्पीकर साहब, आप अनुमति दें। सर, जीएसटी के विषय में थोड़ा मेरा टूटा फूटा हिंदी को माफ करिए। बहुत सारे विषय जीएसटी के ऊपर सुझाव के नाते बहुत सारे मेंबर्स ने कहा। A lot of members have given us suggestions on GST, which certainly I will take to the council, because the ultimate decision is in the council, where states together sir, GST council जहां 2/3 states का representatives बैठते हैं, 1/3 is all the central government has, and it is a constitutional body. So customs duty on very many items, I mean GST, not customs, sorry, GST suggestions on very many items. बोलते हैं। So सुझाव के नाते बहुत सारे हैं सर, मगर उसमें एक आध विषय को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सर, बिफोर आई गो टू द GST, एक विषय में कस्टम्स के ऊपर खत्म करके मैं GST को दोबारा जाती हूँ। Customs duty on chemicals for research work and laboratories has been reduced to 0. Honorable Member Supriya Sule raised it, and पहले भी मैंने बात की उसको। ये वाला, इसमें उनका प्रश्न ये था कि why did you have to reduce? But 150 is the BCD. All chemicals, sir, which come into this country are classified in 3 different chapters, Chapter 28, 29, 38 of the Customs Tariff Act, and they attract different rates. Chapter 28 has 2.5, Chapter 29 has 5%, Chapter 38 has 7.5, and some are in 10% category. Ethyl alcohol attracts a BCD of 150%. That was proposed in the budget, and on that a lot of concerns have been expressed. So I just want to highlight that chapters 3 होने के बावजूद भी एक facilitation measure के नाते chapter tariff heading जो CTH बोलते हैं, CTH 9802 was created some time back for imports of laboratory chemicals
in quantities not exceeding 500 ml or 500 grams. And उसका basic duty था 10%. मतलब छोटे sample size में कोई chemical या कोई liquid जो chemical के नाते liquid के रूप में आता है, उसके लिए quickly deal करने के लिए trade facilitation के लिए अलग सा एक चैप्टर था छोटे छोटे सैंपल्स के लिए. उसका बेसिक ड्यूटी वाज 10%. बट द CTH 9802 चैप्टर का एकदम दुरुपयोग हो रहा था. मतलब इट हैज बीन मिसयूज्ड टू इंपोर्ट इथाइल अल्कोहल व्हिच अदरवाइज अट्रैक्ट्स BCD ऑफ 150%. क्योंकि उसके ऊपर 150 है और उसको छोटे छोटे सैंपल साइज में इकट्ठा इतने सारे ले आओ और उसमें छोटे सैंपल है इसीलिए मुझे 10% का ड्यूटी लगाओ. ऐसे करके सिस्टम को गेम करते रहे कुछ, मैं सभी को दोषी नहीं मानती हूं, कुछ इथाइल अल्कोहल इंपोर्टर्स. To curb this kind of misuse in the budget, this current budget 24-25, this BCD for this particular category CTH 9802 was increased to 150% in the tariff. So ये छोटे सैंपल को दुरुपयोग करते हुए इकट्ठा ले आओ मगर उसमें छोटे छोटे सैंपल रखो, उसको 10% का एडवांटेज लो. ये मिसयूज को करेक्ट करने के लिए 150% टैक्स लगवाए. इतना लगाने के लिए अधिकार है क्या? सिर्फ taxation on tariff and measures like that. I just want to give 3 important points which all of us will know, but I will put it for the benefit of the honorable members. Commerce Minister seated here. Bound rate for any item is determined at WTO. Magar tariff rate or ceiling rate is decided by this parliament. And उसमें prescribed rate ले आने के लिए through notification department customs CBIC करते हैं. So 150% for this custom tariff act 1975 tariff rate, which operates as a ceiling, is approved by the parliament. The ceiling rate to facilitate genuine research and development. Central government, in a recent notification, even as the parliament was in session, we presented it in the house, prescribed 10% BCD on laboratory chemicals imported for use of laboratory. ये क्यों अभी कर रहे हैं? पहले तो 115 सीलिंग बोल दिया. ये इसीलिए कर रहे हैं कि छोटे छोटे सैंपल्स को भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी सेल्फ सर्टिफिकेशन करो और 10% टैक्स लो. ये गेमिंग कंट्रोल करने के लिए था सिस्टम. हम उसमें भी थोड़ा रिलैक्स करके बोलते हैं आप अपनी जिम्मेदारी लो, बोलो कि ये बल्क में नहीं ले आ रहे हैं और you are purposely bringing it with an intention for using in research and give a self certification and take your 10%. That is a facilitation which has been done. I hope that answers the concern of Honorable Member Supriya Sule. And again, on the import of rare minerals, Honorable Member had asked this question. These minerals are not available in this country. There is no substitute available for them in this country. Small quantities are required by so many sectors. High-tech electronics need them, this critical minerals. Therefore, the Mines Ministry is of the view that we need to get them at a concessional or 0% rate, because it'll high-tech electronics ke liye chahiye, telecommunications need them, space, transport, defense, and clean energy system. In sabko ye rare minerals chahiye hote hain. Isliye we have brought it down. There are small quantities which will come. We are conscious of monitoring them as well. Sir, last 2 points. Excise duty on petrol has increased from 9 rupees before 2014 to 20 now. And excise duty in diesel has increased from 3 rupees before 2014 to 15 now. And therefore, the demand was give relief on excise duty on petrol and diesel.
Sir, I have said this several times in this House. Honorable Prime Minister, both in November 21 and June 22, reduced the excise duty on petrol and diesel. But I would like to highlight that in November 21 and May 22, 13 rupees per litre was reduced on petrol and 16 rupees per litre was reduced on diesel, both the times put together. And while petrol and diesel prices were cut by 2 rupees per litre across the country, even in March 2024. But, sorry? नहीं आ रही हाँ सर, मगर ये कट डाउन करने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी है और वो कट डाउन होने के बाद बीजेपी रूल्ड स्टेट सब कट किए, मगर नो, उसमें भी जनता को हित में हम काम नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे करने वाले सरकार सब आज विपक्ष में से हमें मांग रहे हैं कि रेट कट करो। अरे 2 बार किए जी, और तीसरी बार इस मार्च 24 में भी किए। मैं पूछती हूं, स्टेट्स जहां कट नहीं हुआ मगर चुनाव में जीत कर हारने के बाद हिमाचल प्रदेश में वैट ऑन पेट्रोल एंड डीजल बढ़ाया गया। 3 रुपया on petrol and 10 rupees on diesel. I want to ask, that was January 2023, what stops the Congress party from giving relief to the people in Himachal Pradesh? जनता को गुमराह करके जीत करके आने के बाद बढ़ा रहे हो रेट और इधर आकर के हमसे पूछ रहे हो। दूसरा, मैं आती हूं अगले भी। हाँ जी, कर्नाटका गवर्नमेंट, अगेन कांग्रेस गवर्नमेंट, in June 2024 hiked the sales tax on fuel, which made petrol and diesel costlier even there. Petrol and diesel prices went up by 3 rupees. Congress government है उधर, जाके उधर कट करवाओ। सर, फिर मैं आती हूं पंजाब के विषय में। पंजाब के सदस्य सब मांगते हैं बहुत सारे विषय में। 2023 जून में पंजाब गवर्नमेंट led by Aam Aadmi Party, part of the India Alliance, increased the value added tax on petrol and diesel by 10% and 13% respectively. इसके कारण 92 पैसा इंक्रीज हुआ पेट्रोल का दाम, 88 पैसा इंक्रीज हुआ डीजल के दाम पंजाब में। ये इधर आकर के हमसे पूछ रहे जो कर दे काया काट। Tamil Nadu government, sir, led by DMK, had promised in their election manifesto that they will cut prices by 5 rupees a litre and 4 rupees a litre on petrol and diesel respectively. Only 3 rupees petrol cut was made in August 2021 and no cut in diesel was made. ये इधर आकर के हमसे पूछते हैं पेट्रोल और डीजल कट करो। So excise duty पेट्रोल और डीजल के ऊपर लेक्चर देने के पहले वो उनके अपने अपने राज्यों में कर दिखाना चाहिए। सर, मेंबर तनुज पुनिया जी प्रश्न पूछे, सिंथेटिक मेंथोल फ्रॉम चाइना and natural menthol made in India are both attracting 12% of GST. ये सही नहीं है। So उनके लिए मैं जवाब देना चाहती हूँ सर। So एक ही HS कोड था। I don't know if honorable member Tanuj Punia ji is here. I wanted to respond to him. In this natural and synthetic menthol, सही है, बिल्कुल सही है। सर, मैं
ऑनरेबल मेंबर पुनिया को जवाब देना चाहती हूं सर। नेचुरल और सिंथेटिक मेंथोल क्लासिफिकेशन को एक ही एचएस कोड के नीचे आता है, इसके लिए अलग उसके लिए अलग एचएस कोड नहीं है, उसके कारण there are problems. Request was received from the state of Uttar Pradesh to increase the GST rate on synthetic menthol so that the natural menthol which is produced in this country can be treated fairly. However, because of the absence of tariff code or standards to distinguish between natural menthol and synthetic menthol, the issue had not been taken up. In this finance bill, sir, it is proposed to create a separate HS code for synthetic, meaning for natural menthol. And therefore, after this, the GST Council can consider and take its decision on the matter. So that is for Honorable Member Punia, who had raised this issue. So lastly, sir, several suggestions have come as regards GST. As I said, I'll take it up with the Council. But on this issue, I wish to utilize this opportunity to explain what is this matter. 18, sorry? Sorry? I can't hear you. What's he saying? Sir, पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं सर. Sir, life insurance, honorable members and honorable speaker, sir, life insurance और medical insurance के ऊपर GST 18% को रिमूव करो. हाँ, मैं ये विषय में बहुत प्रश्न में उठाना चाहती हूँ सर. Sir, it's amazing. I'm sorry to use this word. It is thoroughly amazing me. मैं डिटेल में आऊंगी, मगर एक चिट्ठी लिख के ऑनरेबल मंत्री जी मुझे, चिट्ठी मंत्रीगण लिखते हैं, मगर क्योंकि वो चिट्ठी किसी और के द्वारा पब्लिक में आया, खुलासा हुआ, उसके ऊपर चर्चा हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द गवर्नमेंट, और पकड़ लो उसको. मैं भी बोलता हूं मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कम करो, क्योंकि उन्हें उनका चिट्ठी मिल गई. और उसके सॉरी, ठीक है, जो भी हो. फिर उसके बाद 200 एमपीस के साथ जीएसटी निकालो इसके ऊपर, प्रदर्शन पार्लियामेंट में. ठीक है सर, सभी पार्टियों आ रहे हैं उसमें, हम भी ध्यान से सुनते हैं सर. मगर दो विषय, माननीय मंत्री जी सर, मैं किसी का नाम नहीं ली, मैं किसी का नाम नहीं ली. अगर किसी को लग रहा है वो अलग बात है. सर, सर, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर, सर, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से टैक्स है. सर प्लीज ध्यान से सुनिए, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री जीएसटी टैक्स लगता था. ये नया विषय आज नहीं आया है और जीएसटी पैदा होने के बाद नहीं आया, हर स्टेट में था पहले. आज आकर इधर प्रदर्शनी करने वाले हर एक से मैं पूछ रही हूँ,
आपके स्टेट में पहले बात किए क्या? उसको हटाओ, नहीं किए। हर स्टेट में था। जीएसटी आने के बाद हर जीएसटी से पहले जो कानून था स्टेट में, वो सब जीएसटी में भी आ गए। अभी वो जीएसटी इज वेरी एक्सॉर्टिव, इट इज वेरी वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, इसमें अभी आया नहीं। जीएसटी से पहले भी आपके अपने अपने राज्य में मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स था, वो पहले मानना चाहिए। और दूसरा, अपने अपने वित्त मंत्री जी जो बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, उनको चिट्ठी लिखा? नहीं लिखा, मगर इधर प्रदर्शन करो। क्यों? जीएसटी में 2/3 भाग लेने वाले स्टेट से अपने अपने वित्त मंत्री को लेटर लिखे हैं क्या? नहीं लिखे, मगर इधर प्रदर्शनी करो, मोदी जी रेट कम करो। ये क्या डबल नाटक, ये नाटक क्या है? सर ठीक है, तब नहीं लिखा, अभी भी नहीं बोले उनके अपने अपने वित्त मंत्री को। कांग्रेस शासित राज्यों से वित्त मंत्रीगण बैठते हैं, आप शासित राज्यों से उनके वित्त मंत्री बैठते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का वित्त मंत्री बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, क्या टीएमसी के वित्त मंत्री बैठते हैं? मगर जीएसटी काउंसिल में इस विषय को मैं ये भी बोलती हूँ खुले मन से, हाँ सभी वित्त मंत्री बैठे। मैं बोल रही हूँ सर, हाँ, दैट इज व्हाई यू आर रेफरिंग ना, किसी दूसरी लेटर को उठा करके राजनीति करने वाले, राजनीतिक रोटी सेकने वाले, सोच लो सर। जीएसटी काउंसिल इस विषय को उनके 31st मीटिंग में उठाए, डिस्कशन हुआ, फिर 37th मीटिंग में आई आती हूँ। आई विल कम बैक टू यू सुप्रिया जी, आई विल कम बैक टू यू, I will come back to you. I'm giving answers to every point that you have raised as is being done for other members. Listen to what I say as a reply. I've heard everybody's point. Sir, 31st meeting mein, thank you. I've learned from you, Dada. I've learned from you, Dada. मैं आपसे सीख रही हूँ, इनसे सीख रही हूँ सर। मैं सॉफ्टली बोलने में ये चिल्ला कर मुझे बिठा देते हैं। कल्याण बैनर्जी दादा से मैं सीख रही हूँ, थोड़ा अग्रेसिव रहना चाहिए। सो 31st मीटिंग में हुआ, फिर 37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ। ये सुनिए ना, ये सुनिए ना, ये सुनिए, बैठिए, आराम से बैठिए। 31st मीटिंग में डिस्कशन हुआ, 37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ, और 47th मीटिंग में भी डिस्कशन हुआ। सो जीएसटी काउंसिल में 3 बार इसके ऊपर चर्चा हुआ है, और मैं एक अहम मुद्दा पर आ रही हूँ सर, इसी विषय में। कोई न्यूज़पेपर में मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उस पेपर का नाम नहीं ले रही हूँ, मगर हाँ सर, please reply to the Union Minister's letter also. yeah, I'm telling you now. The state reply to the Union Minister on GST. I'm coming to all this. There's no point in distracting me, sir. न्यूज़पेपर एक का रिपोर्ट है, मैं पेपर का नाम नहीं ले रही हूँ, मगर उसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉकेटेड, सेंटर हैज पॉकेटेड 24,529 crores on health insurance premium. एकदम गलत बयान, और शिकार भी, उसका हेडिंग भी वही है, सेंटर पॉकेटेड, टोटली रॉन्ग सर। मैं बोल रही हूं जीएसटी कलेक्शन मान लीजिए 18%, कुछ आइटम के ऊपर इस विषय में 18% हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, 9% goes to the state, 9% comes to the center, और जो 9% हमारे पास आता है, और इस विषय में 12,264 crores immediately on collection goes to the state,
24,529 जो लिखा गया गलत, that it is being pocketed by the center. No, if the collection is 24,529, 12,264 crores have gone to the state immediately. बाद में जो 12,264 which comes to the center, उसमें भी 41% goes to the states. So कुल मिलाकर के approximately 73 to 74% of this premium goes to the states. मतलब 100 रुपया जीएसटी आप कलेक्ट करो, 50 रुपया स्टेट को तुरंत चली जाता है. Another 50 rupees जो हमारे पास आता है, उसमें से भी मेरे पास जो 50% आता है 50 रुपीस, उसमें भी 29 रुपीस 50 पैसे स्टेट को चली जाता. मतलब 74 रुपीस और कुछ पैसा हर 100 रुपया में 74 रुपीस स्टेट को चली जाता है. इसमें मोदी सरकार को दोषी रखो और इधर प्रदर्शन करो. हर एक स्टेट में हर एक उनका पार्टी जा करके उधर उनके वित्त मंत्री के सामने प्रदर्शन करना चाहिए. 74 रुपीस आपने कमाया, रहम है आपके हाथ में, रहम है. वो वित्त मंत्री, हमारा वित्त मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री 74 रुपीस कमाकर बैठे हो, गलत है. जाके उधर बोलना चाहिए. 100 में 74 रुपीस उधर जाता है. ये इधर आपके प्रदर्शन कर रहे हो, जाके आपके स्टेट में पूछना आपके अपने अपने वित्त मंत्री जी से. सर, therefore, I'm coming to you, Gogoi, honorable member Sidham. सर, इसीलिए इधर मैं खड़े होकर के 1/3 मेंबरशिप हमारे हाथ में रख के जीएसटी काउंसिल में 2/3 जब राज्य मंत्रीगण बैठे हैं, मैं इतना तो कम से कम करूंगी कि ये हल्ला पार्लियामेंट में हुआ, माननीय सदस्यों के द्वारा उनके अपने अपने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखे नहीं लिखे मुझे मालूम नहीं है, मैं काउंसिल में ये जरूर कहूंगा ये ही हुआ. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष जी. आपने कल रात में देर रात तक उपस्थित रह के माननीय सांसदों को जो मौका दिया रेल बजट पर बहुत डिटेल चर्चा करने का, तो मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि कल रात को करीब 11:30-12 बजे तक अध्यक्ष जी स्वयं रहे और जितने भी माननीय सांसद यहाँ प्रेजेंट थे उन सबको बोलने का आपने मौका दिया. सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सेवा करने का मौका दिया और आज हर कदम पे, हर रेलवे के हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गाइडेंस देते हैं, स्वयं हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं लगातार रिव्यू करते हैं. इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा. माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे की जो सबसे बड़ी समस्या थी इन्वेस्टमेंट की कमी, वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बजट में एक रिकॉर्ड एलोकेशन करके लगातार कई वर्षों तक बजट एलोकेशन बढ़ा के इस जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर किया. माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का जो दिन रात लग के सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाते हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं. माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे भारत की लाइफलाइन है. ये एक ऐसी संस्था है जिस पे भारत की इकोनॉमी आधारित है और देश का जो साधारण मानवी है, हर साधारण मानवी के लिए ये एक सेवा है. मेरा इस महान सदन से निवेदन है कि ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था को हमें टोटली डीपोलिटिसाइज करके इस संस्था को कैसे सुदृढ़ करें, इस संस्था में कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं
इस संस्था में कैसे नए इन्वेस्टमेंट लाएं, रेलवे में किस तरह से ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को सुधारें, इस पे पूरा फोकस रहे। और कल मुझे बहुत ही हर्ष के साथ आपके समक्ष में रखना चाहूंगा कि कल माननीय सांसद 2 दिन में माननीय सांसदों ने कई ऐसे कंस्ट्रक्टिव सुझाव रखे, पक्ष से और विपक्ष से दोनों ही तरफ से कई अच्छे सुझाव आए। और मैं विशेष धन्यवाद भी देना चाहूंगा पक्ष और विपक्ष के सांसदों को कि आपने कई जगह रेलवे के काम की तारीफ की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन प्रयासों को आपने सराहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस जवाब को मैं 10 पॉइंट्स में रखना चाहूंगा और प्रयास रहेगा कि जितने भी विषय आए हैं उन सारे विषयों को एड्रेस करें। जो विषय जितने भी हैं उन विषयों में 3 तरह के, बेसिकली अगर उसको क्लासिफाई करो तो 3 तरह की कैटेगरीज बनती है। पहली कैटेगरी जो जनरल पॉलिसी से रिलेटेड है, दूसरी कैटेगरी जो इंडिविजुअल सांसदों के क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे, कई जगह स्टॉपेजेस का मुद्दा, कई जगह ट्रेन के एक्सटेंशन का, कई जगह आरओबी आरयूबी के कंस्ट्रक्शन का, कई तरह के मान्य सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। इस तीसरी कैटेगरी है किस तरह से रेलवे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से एक नई दिशा में जा रहा है। ये तीनों कैटेगरीज को इन 10 पॉइंट्स में कवर करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा माननीय सांसदों ने रेज किया, और अध्यक्ष जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कॉज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। किसी भी विषय पे कितना भी क्रिटिसिज्म आए, कोई भी पॉइंट आए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, विषय को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी विषय से भागने वाले लोग नहीं हैं। जो विषय सबसे पहले मान्यवर सांसदों ने पॉलिसी का कई जगह रेज किया, सदन में, सदन से बाहर भी, उन विषयों को सबसे पहले मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज रेलवे के कारण, रेलवे के द्वारा एक लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में कर पाता है। मिडिल क्लास के लिए सवारी है ये, और साधारण से साधारण नागरिक की यह सवारी है। इसी भावना के साथ पिछले 10 वर्षों में कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे कि रेलवे की सुविधा हर जन साधारण को मिले और जो हमारी एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है उसको भी मिले। मैं सबसे पहले जो जनरल कोच का मुद्दा आया उसको एड्रेस करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जनरल कोच रेलवे में करीब करीब जनरल और एसी का अगर हम अनुपात देखें, जो रेशियो देखें, करीब करीब 2/3 जनरल यानी नॉन एसी कोचेस, जिसमें स्लीपर और जनरल क्लास के कोचेस होते हैं, और 1/3 एयर एसी कोचेस का एक कॉम्पोजिशन हमेशा रहा है, वो मेंटेन हो रहा है। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, जो जनरल कोच के लिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है। और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में हो जाएगा। आगामी समय के लिए 10,000 स्पेशल प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया है, 10,000 जनरल कोच का प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि जनरल कोच की प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं रहेगी। ये मैं आपके समक्ष सभी देशवासियों को, सभी मान्य सांसदों के माध्यम से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रखें, ऐसा निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी ट्रेन की कल्पना की जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज हो, लेकिन वो कम से कम कॉस्ट में लोगों को यात्रा करा सके। अमृत भारत ट्रेन पिछले जनवरी में, कुछ ही महीनों पहले,
जनवरी में इस ट्रेन का जब प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, टेस्टिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में 2 अमृत भारत ट्रेन इनॉग्रेशन हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से। अयोध्या जी धाम पर हम लोग प्रेजेंट थे सबके सब। अयोध्या जी धाम से ये दोनों ट्रेन चली। पहली ट्रेन चली मालदा से बेंगलुरु के लिए और दूसरी ट्रेन चली दरभंगा से दिल्ली के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत हर्ष के साथ आपके सामने ये विषय रखना चाहूंगा कि ये दोनों ट्रेन, जिसमें 22 कोच में से आधे स्लीपर है और आधे जनरल कैटेगरी के कोचेज हैं, जनरल कोच है, इन दोनों ट्रेन में जो फैसिलिटीज हैं वो हर तरह से पिछली जितने भी सरकारों का आप हिसाब देख लें उन सब से कई गुने बेटर है। और दोनों की दोनों ट्रेन इतनी पॉपुलर है कि करीब करीब 5-6 महीने की टेस्टिंग के बाद में आज मैं हर्ष के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 और अमृत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय लिया है। अध्यक्ष जी, 1000 किलोमीटर की जर्नी इस ट्रेन में 400 रुपए में, 450 रुपए में होती है। और बहुत ही आपने सबने देखा होगा जो पुराने 1980 और 1990 की डिजाइन के LHB कोचेस थे, उन सब की ट्रेन में जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक झटका सा लगता है, क्योंकि वो डिजाइन एक उस जमाने की थी, 80 और 90 के डिजाइन, 70s की 80s की डिजाइन थी। आप अमृत भारत ट्रेन में बैठोगे, इसमें सेमी परमानेंट कपलर्स एक नई टेक्नोलॉजी लाए जो कि ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी झटकों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे। और भी कई सारे फीचर्स हैं, अच्छी टॉयलेट्स हैं, अच्छे जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, बर्थ की डिजाइन चेंज हुई है, कई तरह के इसमें नए फीचर्स लगे हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जैसा आरंभ में कहा, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है, जन साधारण की सवारी है। ये जो 5 महीने का एक्सपीरियंस रहा अमृत भारत ट्रेन को चलाने का, इस एक्सपीरियंस के आधार पर और 13 नए इंप्रूवमेंट्स ट्रेन में किए गए, विशेषकर जो अपर बर्थ पे चढ़ने का। और मैं अगर आपसे निवेदन भी करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में अपर बर्थ और मिडिल बर्थ में चढ़ने के लिए टॉयलेट्स की क्लीनिंग और बेटर हो, पानी का फ्लो, टैंक में पानी के टैंक के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह वगैरह, कई तरह के ऐसे इंप्रूवमेंट्स, 13 इंप्रूवमेंट्स किए गए जो कि अगली 50 अमृत भारत ट्रेन में इंक्लूड होंगे। ओवरऑल मैं इस महान सदन के सामने इस विषय को रखना चाहूंगा कि एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस गरीब से गरीब वर्ग पर और मिडिल क्लास वर्ग पर है। और इसीलिए सारा का सारा जो ट्रेन का डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट भी उसी आधार पे हो रहा है। मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि कल और परसों 2 दिन विपक्ष के कई सांसदों ने, मान्यवर सांसदों ने भी वंदे भारत ट्रेन के लिए डिमांड की। हालांकि राजनीतिक तौर पे कई जगह कांग्रेस के बाहर, इस सदन के बाहर कांग्रेस के ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए, और कई बार दूसरे कई दलों के भी आते हैं। लेकिन संसद में जो प्रामाणिक तौर पर कहा, मैं मान्यवर विपक्ष के सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन का और जो आत्मनिर्भर भारत की इस बड़ी ताकत का जो आपने एक्नॉलेजमेंट किया, उस एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड पर ये बात रिकॉर्ड पे रहे इस महान संसद के कि जब वर्ल्ड क्लास सेमी हाई स्पीड ट्रेन के डेवलपमेंट की बात आई 2015 के आसपास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली 2014 में। 2015 में जब निर्णय लेने की बात आई कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन एक अच्छे क्वालिटी की, मच बेटर, जो आज की भारत की एस्पिरेशंस है मिडिल क्लास की, उस एस्पिरेशंस को एड्रेस करे वैसी ट्रेन बनानी है, तो ये रिकॉर्ड पे रहे माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने
एकदम स्पष्ट तौर पे कहा कि जो पुरानी पद्धति थी कि बाहर जाओ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाओ, उस पद्धति को उन्होंने नकारा और स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरे भारत के इंजीनियर्स, उनकी क्षमता है, मेरे भारत के वेल्डर्स, मेरे भारत के इलेक्ट्रीशियंस, हमारे देश में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, इतनी बुद्धिमत्ता है कि हम अपने आप डिजाइन करेंगे। और अध्यक्ष जी, ये वंदे भारत ट्रेन उसी आत्मविश्वास का, उसी भारत की क्षमताओं पर, भारत के युवाओं की क्षमताओं पर विश्वास की एक झलक है, विश्वास की एक मिसाल है कि आज ये ट्रेन 100 से ज्यादा सर्विसेज देश के कोने कोने में, करीब करीब हर राज्य में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कल मान्यवर कई सांसदों ने कहा कि भेदभाव की बात कही। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा इस महान सदन में रखना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जब वंदे भारत का रोल आउट किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर प्रदेश में वंदे भारत को रोल आउट करें। और इसी कारण आज केरल से लेके आसाम तक और जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, हर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन सर्विस थी। कहीं पर भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव की भावना नहीं है। किसी भी तरह की सर्विस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, हर जगह पूरे देश का ध्यान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पैसेंजर सर्विसेज की इसी कड़ी में दो बहुत अच्छे जो इनोवेशंस हुए वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जो कम डिस्टेंस के बड़े शहर है, कम डिस्टेंस के जो बड़े शहर है 150-200 किलोमीटर के बीच के, उसमें एक रीजनल ट्रेन चले, जैसा कि दुनिया के कई देशों में है। इसके लिए वंदे मेट्रो डिजाइन की गई है और पहली गाड़ी डिजाइन होने के बाद में कपूरथला फैक्ट्री से निकल चुकी है। उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी और बहुत जल्दी वो लॉन्च होगी। और वंदे मेट्रो भी आप देखेंगे अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन की तरह ये एक ऐसी सर्विस होगी माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत में यात्रियों के लिए एक नया वरदान साबित होगी। एब्सोल्युटली मॉडर्न फैसिलिटीज, सेफ्टी से लैस हर तरह के जो इनोवेशंस जो अब तक सीखे गए और दुनिया भर में जो अच्छे से अच्छे फीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स वंदे मेट्रो की ट्रेन में रखे गए। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ लंबी दूरी की ट्रैवल के लिए 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से ज्यादा की ट्रैवल के लिए वंदे स्लीपर का भी डिजाइन किया गया है और बहुत ही बारीकी से डिजाइन के हर फीचर को ध्यान में रख के इस ट्रेन का डिजाइन किया गया है। पहली ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हो गई है और उसका टेस्टिंग का काम चल रहा है। ये दोनों के दोनों ट्रेन वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत, वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है माननीय अध्यक्ष जी, आगामी वर्षों में ट्रेन के ट्रैवल को, एक साधारण मानवी की सवारी को एक नया स्वरूप देगी। और बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जो इनोवेशन है जन जन को भाएगा और देश के जो 140 करोड़ देशवासी हैं, 700 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, यानी एक से अधिक बार जो ट्रैवल करते हैं, 700 करोड़ पिछले वर्ष ट्रैवल किए हैं पैसेंजर्स टोटल, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लेके आओ और नई टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करो, भारत में ही मैन्युफैक्चर करो और लगातार इंप्रूवमेंट करते रहो। ये जो भावना है, ये एक भावना को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके बाद में आऊंगा जो सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा है पैसेंजर सेफ्टी का। अध्यक्ष जी, पैसेंजर सेफ्टी एक ऐसा मुद्दा है जो हमें अति संवेदनशीलता के साथ रखना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। और मैं धन्यवाद भी दूंगा मान्यवर सांसदों को, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के मान्यवर सांसदों ने बहुत ही एक प्रभावी तरीके से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस विषय को डिबेट के दौरान रखा। मैं आपके समक्ष
जो स्टेप्स लिए गए उनकी बात करूंगा पहले, और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया वो आपके सामने रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी जो समस्या थी भारतीय रेलवे में, अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसके कारण हर साल कोई न कोई ऐसी दुर्घटना होती थी जिसमें कोई स्कूल बस, कोई ट्रक, कभी कोई स्कूटर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बिना व्यक्ति वाली फाटक से क्रॉस करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छे फोकस्ड परिणामों के कारण, एक्शन के कारण 2019 में देश में करीब जो 9000 के आसपास अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स थी, वो सारी की सारी कंप्लीटली समाप्त कर दी गई। जगह जगह आरओबी बनाए, कई जगह गेट लगाया, कई जगह अंडरपासेस बनाए, वो कंप्लीट हुआ। वो एक बहुत बड़ा समस्या का कारण था, वो समाप्त हुआ। अध्यक्ष जी, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। ये स्टेशंस का जो कंप्लीट कंट्रोल होता है, वो स्टेशन का कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के माध्यम से। इसको डिजिटल कंट्रोल भी कहते हैं। तो दुनिया के करीब करीब हर बड़े रेलवे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 1980-1990 वाले दशकों में लग गई थी। अपने यहाँ बहुत ही एक स्लो पेस पे काम चल रहा था। 2004 से 2014 का अगर पीरियड देखें, मात्र 837 स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पे कवर हुए थे। लेकिन 2014 से 2024 के दशक में 2964 स्टेशंस को कवर किया गया, और साथ ही साथ उसमें एक ऐसा इनोवेशन लाया गया माननीय अध्यक्ष जी, कि विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैं, वो सब के सब आपस में इंटर ऑपरेबल बने। यानी एक मैन्युफैक्चरर का इंटरलॉकिंग ईआई सिस्टम है, वो और दूसरे मैन्युफैक्चरर का ईआई सिस्टम, वो दोनों आपस में इंटर ऑपरेबल बने। उसका इनोवेशन लास्ट ईयर किया, और उसके बाद में अब देश के करीब करीब जो 8000 स्टेशन है हमारे, सारे के सारे स्टेशन को कवर करने का कंप्लीट एक मिशन मोड में काम अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ होगा रेलवे में एक्सीडेंट्स की कमी में, रेलवे में ओवरऑल सेफ्टी में इंप्रूवमेंट। अध्यक्ष जी, तीसरा बड़ा काम हुआ, सब जगह करीब करीब पूरे देश में जो लोकोमोटिव्स हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई, और ये कई मान्यवर सांसदों ने उठाया, तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कवच की व्यवस्था, और कई मान्यवर सांसदों जी ने, कल डॉक्टर काकोली जी ने भी कहा कि जब ममता दीदी माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जब थी, यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर थी, तब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाए थे। मैं इस विषय को बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करते हुए बहुत स्पष्ट भाव से केवल तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रेन्स का प्रोटेक्शन जो होता है सेफ्टी का, उसको टेक्नोलॉजी को कहते हैं एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। एटीपी टेक्नोलॉजी, इसको इस पूरी क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी को एटीपी कहते हैं।